यही नहीं पता कि मुझे बीटेक के बाद करना क्या है, वेयर टू गो, हाउ टू गो, व्हाई टू गो. He's still dark. What kind of education we are giving to him? He cannot decide his future because entrepreneurship word तो उसको उसके स्पेलिंग ही नहीं पता चल रही अभी तक. और हमने नया नाम दिया इसको, बहुत अच्छा refined name, the skill development. Basically it's a जुगाड़ technology of my country. Each and every person who's going to take a birth on this earth has one particular skill in his or in her brain, because the wonderful brain we have, the world's wonderful machine can never be crossed. Only thing is we people have to channelize, being a teachers, being a entrepreneurs, being a mentors, we have to channelize that. That is called skill development. मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ, उसमें से कोई मुझे अच्छा सिंगर मिल जाता है, उसमें से कोई अच्छा मेरा स्केच बना देता है. कहता हूँ यार तुम तो बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, स्केच बना रहे हो. सर ये तो बचपन से मेरे अंदर आर्ट है. फिर इधर क्यों आ गए? पापा बोल रहे हैं कि नहीं बेटा इससे रोटी नहीं कमाई जाती है, इंजीनियरिंग कर ले बेटा, तभी कार मिलेगी, एसी कमरा मिलेगा बैठने के लिए. ये आर्ट्स में तो क्या रखा है? दिस टाइप ऑफ एजुकेशन वी आर गिविंग टू आवर आर्ट्स. कितनी बार इनको वो वाली मूवीज उठा उठा के दिखाएं, तारे जमीन पर, 3 इडियट्स, कितनी बार दिखाएं. इतनी मूवीज बनाते हैं, मेहनत करते हैं, चलाते हैं थिएटरों में, देखते हैं. 3 दिन असर रहता है घर में, 3 दिन वैसे स्टाइल में घर में बातें होनी शुरू हो जाती है, चौथे दिन फिर वहीं पहुंच जाते हैं. बिकॉज वी फॉरगेट, यू नो, ये तो सारे पॉलिटिशियंस भी कहते हैं, घबराओ मत, हिंदुस्तान की जनता बहुत जल्दी भूल जाती है, टेंशन मत लो, दोबारा फिर आ जाएंगे. दिस इज व्हाट हैपनिंग, यू नो, बिकॉज वी आर लैक इन एजुकेशन. वी हैव टू इंटीग्रेट, we have to integrate the small institutions, ITIs with the polytechnics with the engineering with the universities, and we should not have any ego when a professors from the IIT should go to the rural school to teach some students. जब कलाम साहब जाके पढ़ा सकते थे being a president, तो फिर एक IIT के प्रोफेसर की ईगो क्या होगी? होनी ही नहीं चाहिए. इस चीजों को सामने रखते हुए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देख लिया और वो बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है. नाउ आई विल टेक 5 minutes फॉर दैट. व्हाट बेसिकली इज गोइंग टू बी हैपन? इट इज गोइंग टू बी लॉन्च वेरी सून, एंड टुडे यू कैन चेक योर मोबाइल्स एंड द ऐप इज ऑलरेडी देयर. आई विल टेल यू व्हाट इज दैट. व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग, one of my batchmate who was the topper in my class could not complete the degree in 4 years because he fell down one day and his leg got fractured and he could not sit in the examination. He got detained and his degree late by 1 year. You know the system, education system. Second thing, you ask any 6th or 7th standard student, beta, what is your favorite subject? He will say mathematics. You say, oh wow, mathematics is your favorite subject, it's wonderful. I'll tell you frankly, that student doesn't know what basically the difference between mathematics and English, because of the teacher who's teaching in the class is teaching in such a way that he loves the teacher, he loves the subject. That is the favoritism, comes from the teacher, not from the subject. That is called the favorite subject. ये दूसरी एग्जांपल आ गई. तीसरी एग्जांपल, टीचिंग ईगो. बेटा तुमने कल मुझे सुबह जाते हुए विश क्यों नहीं किया? सर मैं तो घर में भी नहीं करता विश. तो मेरी क्लास में आना, तेरी सप्ली लगाऊंगा. 36 का आंकड़ा पड़ गया, उसकी डिग्री 1 साल लेट हो जाएगी, क्योंकि आज का हमारा ऑटोनॉमी सिस्टम है ना यूनिवर्सिटीज. हमने ही पढ़ाना है, हमने ही पेपर सेट करना है, हमने ही ग्रेड देने हैं. तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे आपके दरबार में, आपके मंदिर में फियर से आते हैं, लव से नहीं आते हैं. परेश रावल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी अपनी मूवी में, बहुत बार देखता हूँ OMG. आई रीड अगेन एंड अगेन, आई वॉच दैट मूवी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, you know, through by air, so I put in my laptop such kind of movies I have to see again. कहते भगवान के साथ रिश्ता प्यार का होना चाहिए, डर का नहीं होना चाहिए कि डर के मंदिर जाना है, नहीं तो भगवान जी को गुस्सा आ जाएगा, मंदिर नहीं आया था, जा तेरे को श्राप दिया. अरे ऐसा नहीं है यार. वैसे ही तो हमारे बच्चे कर रहे हैं, क्लास में आते किस बात के लिए? टीचर मुझे डिटेन कर देगा, मेरी सप्ली लगा देगा. इन सारी चीजों का सोल्यूशन निकाला हमने. क्या सोल्यूशन निकाला? एक ऐसा शब्द निकाला जो हिंदी में भी पूर्ण है और इंग्लिश में भी पूर्ण है, कॉल्ड स्वयं. SWAYAM. हिंदी में तो स्वयं मुझे सबको बताने की जरूरत ही नहीं है, खुद से, अपने आप से कुछ सीखना है, सबसे पहले अपने आप से सीखो. दैट इज स्वयं. इंग्लिश में स्टडी वेब्स टू एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. दैट इज स्वयं. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट MOOC is going to be launched in India by प्रधानमंत्री जी, maybe by next month, and the target is 3 crore learners, not students, learners, with 10,000 courses starting from the 8th standard till PhD. And you can check it from your Google swam.gov.in.
अब इसमें होने क्या जा रहा है? I have to touch. Any housewife, any dropout, any rural candidate sitting at home wants to add some value addition is his own skill or education without paying anything, must have one laptop or desktop or maybe a mobile phone, Android or iOS or maybe Windows phone. He can go to this site, he can have the video as well as text material for each and every course designed by different NCs of the country, UGC, NCRT, NIOS, CEC, IM, Bangalore, NPTEL, all ITILs lectures we have made available free of cost with assignments, with tutorials. This is value addition one part. अब आ जाइए, the student which is already doing BTech, BA, BSc, BCom can register SWAM 20% credits of the all Indian degree curriculum, any from 9th till PhD can be creditable under choice grade credit system from SWAM to his own degree, her own degree. Already the regulation has been published by UGC and AICTE. This is called SWAM. I feel myself so privileged that Additional Secretary Subramaniam ji is given this responsibility to AICTE and made me the in charge of SWAM for this country. I really feel very proud while doing this job. खुशी होती है कि AICTE में एक देश के लिए कुछ करने का मुझे अवसर मिल गया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देने के लिए. सिर्फ the student has to appear in the examination at the university, which 800 universities are already integrated, and it is made mandate for each and every institution. If student is filling the form, this particular course from SWAM, he can get from SWAM 20%, not more than 20% credit. Not for labs, only for theoretical subjects. I have to make it clear because being a technical education, we have the labs also. So labs cannot be done through online system. ये तो एक गैप फिलिंग की हमने हमारी जनरेशन को देखते हुए कि आज का बच्चा टीचर से कम मोबाइल से जुड़ा हुआ है. Today's student is more screen attached than parents, than teacher. So let him come to the screen. Let him gain from screen free of cost some value addition courses he can do. Any learner, बच्चे बूढ़े और जवान कोई भी कर सकते हैं. बी पार्ट. क्या हमने अपने बच्चे को देश की जड़ों के साथ जोड़ लिया? वो पार्ट अभी मिसिंग है. तभी सीई को ये कार्यक्रम आज रखना पड़ा. और ये कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहिए, चंद लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए. मैंने अपनी वो उन्होंने कहा बाइट देनी है. आई एम नॉट दैट लेवल की मेरी भी बाइट होनी चाहिए, फिर भी दिया एज अ प्रोटोकॉल, एज अ सिस्टम. आई ऑनर दी ऑर्गेनाइजेशंस एंड आई एम ग्रेटफुल. आई हैव जस्ट सेड वी शुड गो. गुरु नानक ने कहा था उजड़ो. किनको? इंटेलेक्चुअल्स को. और जो बस्ती गंदी थी ना, जब पत्थर मारते उनको कहते बसते रहो बसते रहो. तो मर्दाना जी कहते गुरु साहब ये क्या चक्कर है, इन्होंने आपको पत्थर मारे कह रहे बसते रहो. वो पीछे इन्होंने इतना आपको लंगर छकाया, इतनी सेवा की और आपने कहा उजड़ो. फंडा वाज वेरी सिंपल. यू स्प्रेड आउट, go different corners of the country or the world and make others like you. And if you have a dirty mind, please be here only. Be here only. Don't go anywhere. Don't make others. Don't pollute others. That was the philosophy of this Ashirwad given by Guru Nanak during his Van Udasi. The system is very simple. If we are at Delhi, it's very comfortable coming such a beautiful hotel ambience, enjoying this lunch and tea and coffee and discussing about this philosophy of education. We love to become because we are here only. I think we should take pain. Each and every one of us make one mission. Should go to one particular place which nobody can reach, like that rural area or that interior, and organize such kind of program over there. Educate the teachers first there. एक डॉक्टर गलती करता है तो आदमी एक मरता है, इंजीनियर गलती करता है तो एक पुल गिरने से 100 लोग मरते हैं. ये बहुत स्टैंडर्ड की कहावत है, लेकिन अगर टीचर ने गलती की तो हमारा देश ही कुछ और हो जाएगा. दिस इज द फैक्ट. क्योंकि टीचिंग सबसे खतरनाक प्रोफेशन है. नहीं आना चाहिए, बाय फोर्स कभी मत आओ. टीच द जनरेशन. Don't be a teacher if you don't want to be a teacher. Please let the vacancies there. हम इंस्टीट्यूशन कम से बात चला लेंगे, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज यूपीएससी ने कर दी, जब इंडियन आर्मी ने जब कर दी, फिर देखिए देश कहां जाने वाला है. भगवान का शुक्र है कि हमारी यूपीएससी और इंडियन आर्मी इन चीजों से बची हुई है अभी तक. दे हैव द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन. हमारी यूनिवर्सिटीज को भी इसके ऊपर सोचना पड़ेगा. The education system has to think. The think tank sitting over here
must spread, must give your recommendations. Link with the Vedas. Please link with the Vedas. Our students doesn't know the value of it, that's why they don't. हुआ क्या? I'll tell you. I'm just going to take 2 minutes more. I should not take more time. I understand. रात को नाखून काट रहा है बच्चे, तो मदर ने कहा बेटा नाखून मत काटो. अरे झाड़ू को सीधा खड़ा करके रखा है, तो बच्चे, आज के बच्चे, क्या मामा कैसी बातें करते हैं आप? अंधविश्वासों की बातें करते हैं. कहाँ लिखा हुआ है? मम्मी चुप, दादी चुप, लिखा तो कोई भी नहीं है. प्रॉब्लम यहां पे आई है हिंदुस्तान में, हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, थीसिस नहीं करते हम. अगर करते हैं तो कट पेस्ट पे चले जाते हैं. डॉक्यूमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. हाँ, वेदास तक तो बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया. क्या यहीं पे बात खत्म होती? इस वेदास के आगे पीएचडी क्यों नहीं की गई? एक टॉपिक पे पीएचडी, गीता के एक टॉपिक को उठाओ, उसके ऊपर एक क्या नकल कई पीएचडी हो जाती है. जब ओशो जी ने एकिमकार के ऊपर 21 किताबें लिख दी, तो फिर क्या कुछ नहीं. एक दोहा कबीर जी का अपने आप में कितनी पीएचडीज लेके बैठा हुआ है. वी हैव टू एक्सप्लोर ऑन इट. डॉक्यूमेंटेशन में कमी है हमारे हिंदुस्तान में. वी डू नॉट हैव द डॉक्यूमेंटेशन. फिर क्या करना पड़ता है? डाउनलोड करना पड़ता है पीडीएफ फाइल्स, देन ट्रांसलेट इन हिंदी और इंग्लिश एंड Bengali, etc. In my SWAM, we having 10 languages translations also free of cost to the same topic. We already started this job. This is going to be launched with the 2 languages. Beta version is already launched. You can check from your mobiles. The app is there free of cost. Hindi and English is already there. With the 160 courses we already uploaded. इसमें पता क्या ढूंढ रहे हैं हम? इसमें जैसे व्हाइट हाउस में खड़े होकर मोदी जी ने बोला था ना, इन इंडिया आई टू हैव वन इमरान खान. सबके कान खड़े हो गए. इमरान खान कौन है? अभी हिंदुस्तान में व्हाइट हाउस में मोदी जी ने इमरान खान का नाम ले दिया. फटाफट तारे घूम गई. रविशंकर प्रसाद जी मिनिस्टर थे हमारे ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने सारे डीजीएम्स की ड्यूटी लगा दी. इमरान खान पता करो, तो टेलीफोन फोन होता है लैंडलाइन, तो नाम पता चलते हैं. पकड़े गए, पता चल गए कहाँ थे. गुजरात के छोटे से गांव में एक संस्कृत के टीचर थे इमरान खान. भाई मोदी जी ने उनकी क्यों प्रशंसा कर दी? एक संस्कृत के टीचर ने 100 मोबाइल ऐप्स बना के अपने बच्चों को सिखाई हुई थी स्कूल में. 100 मोबाइल ऐप्स. तभी मोदी जी ने गर्व से कहा व्हाइट हाउस में, आई टू हैव वन इमरान खान इन इंडिया. तो ऐसे इमरान खान को हम लेके आ रहे हैं थ्रू स्वयं. स्वयं में आपको पॉपुलर टीचर्स का अलग से एक ब्लॉग नजर आएगा. बच्चे बाय टीचर भी कोर्स करेंगे. अच्छा ये वाला टीचर है, देन दिस कोर्स विल बी वंडरफुल. पॉपुलर कोर्सेज भी नजर आएंगे. ओ दिस इज अ वंडरफुल कोर्स, सो कॉल्ड ब्यूटी. अभी मेरे को यहाँ पे एक डेलीगेट मिले, कहते हमारे कोर्स का क्या करें, वीएलसीसी चलाते हैं ब्यूटी के लिए, तो ना इंजीनियरिंग एआईसीटी हमें दे रही है अप्रूवल, ना यूजीसी दे रही है, तो क्यों ना स्वयं के पोर्टल पे ही आ जाए. Let the beautician course to be run through SWAM, because we have 117 already, and national skills quality framework, the qualification framework, we have 117 curriculums, you know. Why not the 118 and 120? So उसमें हमने एक लोग देख दिया. Submit your idea. It means any teacher, anybody would like to add a course, he or she can submit the idea and she will approve it, and the course will come on the SWAM, free of cost. Copyright with the AICTE. This is the what. जब कोई भी सरकार अच्छा काम करे ना, उसकी हमेशा प्रेज करनी चाहिए. ये नहीं कि हम सरकार के साथ जुड़े इसलिए करनी चाहिए. अच्छा काम करें तो प्रेज करनी ही चाहिए. मेक इन इंडिया का थीम मुझे तब समझ आया जब मुझे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने को मिले और पॉलिसी देखने को मिली. स्टार्टअप इंडिया को जब मैंने पढ़ा ध्यान से, क्योंकि मुझे एक दूरदर्शन पे कार्यक्रम देना था राजस्थान, तो मुझे रात को पढ़ना पड़ा कि भैया कल कुछ भी बच्चे क्वेश्चन, लाइव था प्रोग्राम, बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते थे. उन्होंने मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं शेयर की. इट वॉज नॉट स्क्रिप्टेड प्रोग्राम. वही बात हुई, बच्चों ने वहाँ पे पूछ लिया कि लड़कियों के लिए अलग से क्या प्रावधान है. पढ़ के गया था मैं, होमवर्क किया हुआ था. मैंने कहा बेटा 10 लाख से लेके 1 करोड़ के लिए अलग से धनराशि लड़कियों के लिए और दलित विद्यार्थियों के लिए है, और 3 साल तक उस पर इनकम टैक्स की टोटली छूट है. ये है स्टार्टअप इंडिया. और ऐसे बहुत सारी चीजें. अगर मैं सारी पॉलिसीज का यहाँ पे व्याख्यान करने लगूँ तो ये पूरा दिन छोटा पड़ जाएगा. इतनी स्कीम्स है लेकिन पहुंच नहीं पा रही है, पहुंच नहीं पा रही है. प्रॉब्लम एजुकेशन की है. वी कैनॉट एजुकेट द अवार्ड्स, वी कैनॉट एजुकेट द जनरेशन. पहले उनको शास्त्रों के साथ जोड़ लीजिए. यही समय है, शास्त्रों के साथ जोड़ लीजिए. शास्त्र बंद पड़े हैं अलमारियों में, वो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं. तोड़िए उनको व्हाट्सएप से. ये बहुत खतरनाक बीमारी आ गई है. संभाल लीजिए अपनी जनरेशन को, अपने फ्यूचर को. दैट्स ऑल. थैंक यू. Thank you so much, sir, for your enlightening words of wisdom. I now request Professor R.P. Dahiya to kindly address the elite gathering. आप सभी को मेरा नमस्कार. My dear colleagues and friends,
This is, I think, second or third time I'm participating in the CEE program. Madam Jyoti Arora always picks up a very topical theme for organizing these programs. At the same time, she also invites people from all over the country and honors them for their excellent work done. So I compliment you for that. My intro was given here, which is a bit old. I would like to say a few words about myself first, then I'll continue. I was born in a village, small village. I had my school education in the village school up to 8th class. And many of you who are in the age group of around that, you also might have a similar experience. I used to sit on the floor in the school. There were no desks or benches. There were not even proper kind of rooms available. Sometimes we used to sit outside. And continuing from there, at my high school from a nearby town. And high school examination was conducted by a university, not like a board, not like the board, so on. Continued and did my PhD. My first job was at Physical Research Laboratory, Ahmedabad. I'm referring to this because PRL Ahmedabad was established by our great Dr. Vikram Sarabhai. Dr. Dave was mentioning about him. And other space activity, they were initiated by Dr. Vikram Sarabhai from Ahmedabad and then went to South. To have worked there around the same time. It was long back, 1973 to 77 there. And then I came to IIT Delhi. I worked at IIT Delhi for more than 36 years. In between, I kept going abroad, worked abroad also. I feel that I'm privileged to have all this kind of experience, starting from a small village, sitting on the floor, studying in a village school, and going up to that level. In many countries I worked, developed countries, Europe, Japan, America, so on. And I happen to be also in the capacity of Vice Chancellor at 4 different universities, including NIT, National Institute. I was Vice Chancellor in a state government university. So having said all this, system at different levels. Now, after listening to the excellent presentations in the first session by very learned people, our dignitaries, about the metric education, also the education by His Excellency talking about in the Islamic countries and so on, and also meditation, and plus my predecessor speaker from AICTE. Most of the things have been covered and very excellently. I may not be able to come to that level, sir, Dr. Dave, you, because the type of quotations you have given from our ancient scriptures, very knowledgeable people. But looking at the topic here, Indian Philosophical Foundation for Modern Education. Now, our education foundations were started from Gurukuls, was mentioned. Our Vedas, starting with the 4 Vedas which were written by Ved Vyas ji, and so many seers, ऋषि मुनि जो हमारे रहे, जिनको मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि वो हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे, जो आजकल के लैंग्वेज में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कहे जाते हैं, वो थे. Historically, there are certain things which there are some aberrations, some names are attached by Western or by their scientists, engineers to some of the discoveries or inventions which are made here. There is no point in going into those details. What needs to be done is that what we have inherited and how did we move forward. Historically, I tried to look at, when I was a student in school, I used to ask my teacher in class 9, कि वेद किसने लिखे.
my Sanskrit teacher, he was also a bit perplexed. He used to explain to me, like a father, he makes a house and he makes arrangement for everything for the family in the house. Similarly, the creator of this universe, I can say, God, when God created human beings, then he made it a point that all knowledge must also be available, and when he made this, he created 4 Vedas. That's what kind of thing. But typically people say Ved Vyasji had written this about 3,500 years ago. The first Ved was written. So this is how history goes on. And then we had a Gurukul Paddhati, Gurukul Shiksha. गुरुकुल में क्या होता था? गुरुकुल में शिष्य और शिक्षक, स्टूडेंट टीचर रेशियो जो आज के दिन हम बात करते हैं, द स्टूडेंट टीचर रेशियो वाज मोर कंडुसिव, दैट ए टीचर, सिंगल टीचर कैन लुक आफ्टर द स्टूडेंट्स and according to his capability and capacities, imparted education in totality. Today, our education system is very different from that. We make people literate, we give knowledge